हेलो एवरीवन। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स को रीडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनके डिफरेंट मॉड्यूल्स में बहुत अच्छा बैंड स्कोर होता है, वेदर इट इज स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग। बट रीडिंग जो पार्ट है कहीं ना कहीं बैंड स्कोर कम आ रहा है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीडिंग में, जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूट करता है रीडिंग एज वेल एज राइटिंग में। तो प्लीज प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन कंसिस्टेंटली। एंड जो क्वेश्चन जो जितने भी पैसेजेस हमने वीडियो में डाले हुए हैं उसमें हर एक पैसेज का मीनिंग अच्छे से इलेबरेट किया है। जो ब्लैंक्स है उनके आंसर्स अच्छे से किए हुए हैं, रीडिंग के डिफरेंट रूल्स बीच में बताया हुआ है। वन मोर थिंग, पूरे पैसेज को करने के बाद दोबारा से उसको रिवाइज करवा गया है ताकि आपको अच्छे से वो चीज याद हो जाए, आप उसको मेमोराइज कर सके, आप उसको अंडरस्टैंड कर सके। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू ऑल्सो जस्ट प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, एंड बिकॉज अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगी और आपका बैंड स्कोर सिक्योर करेगी। सो प्लीज गेट योर हायर बैंड स्कोर एंड हैव अ गुड लक। This question we are talking about Canadian Arctic. This summer, 41 UBC alumni and friends participated in expeditions of the Canadian Arctic and the legendary Northwest Passage. Presentations, conversations, and learning accompanied their exploration of the great outdoors. Yes, great outdoors aboard the Russian flagged academic coffee designed and built in Finland as a scientific research vessel in 1989. कहते जो ये दिस समर 41 यूबीएस एलुमनी और फ्रेंड्स पार्टिसिपेट किया इन्होंने, कोई ये कॉन्फ्रेंस टाइप कुछ है, तो वहां पे आउटडोर अब्रॉड में रशियन फ्लैग एकेडमिक लॉफी और उसके डिजाइन के बारे में जो बना था कहां पर, फिनलैंड में एक साइंटिफिक रिसर्च वेसल की बात हुई है जो 1989 में कॉन्फ्रेंस हुआ था। हर ब्रिज वाज ओपन टू पैसेंजर्स, जो ब्रिज था वो ओपन हुआ था पैसेंजर्स के लिए वर्चुअली 24 आवर अ डे। एक्सपर्ट ऑन बोर्ड expert on the board presented on topics including climate change, wildlife, Inuit culture and history, and elderly European explorer. UBC Professor Michael Beers presented on the issue of Arctic sovereignty, a dash cause of, a growing cause of। ये बहुत सारे रीजंस बताए हैं, क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ, इन्यूट कल्चर एंड हिस्ट्री। सो ग्रोइंग कॉज ऑफ डिबेट एज एन आइस मेल्ट, मेन कॉज क्या था, आइस मेल्ट होना था, न्यू शिपिंग रूट्स ओपन एंड नेचुरल रिसोर्सेज डैश एक्सेसिबल become accessible, natural resources become accessible। Recommended pre-trip reading was late UBC alumnus Barry Bertrand book, The Arctic Grails. So our first answer is great about outdoors and second answer is experts on the board, जो लोग बोर्ड में बात कर रहे थे। ग्रोइंग कोज क्या था, आइस मेल्ट होना। एंड लास्ट आंसर इज नेचुरल रिसोर्सेज बिकम एक्सेसिबल, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो एक्सेसिबल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जेनरोसिटी। American approached a record level of generosity last year of the $260.28 billion given to charity in 2005. 76.5% of it came from individual donors। कहते टोटल इतना सारा चैरिटी में फंड आया है और 76.5% जो अमाउंट है वो डोनर्स, इंडिविजुअल डोनर्स है। These people gave across the range of non-profit bodies from museums to hospitals to religious organizations with a heavy emphasis on, emphasis के साथ मेन फोकस क्या था, on disaster relief। जो कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज हुई है वहां से उन लोगों को रिलीफ होना चाहिए आफ्टर द एशियन सुनामी एंड यूएस hurricanes। In total, Americans gave away 2.2% of their household income in 2005, slightly above the 40-year dash of 2.1%. 40-year average. Yes, 40-year average of 2.1%. So our first answer is individual donors. And second answer is emphasis on, heavy emphasis on किस चीज पे था, disaster relief के ऊपर था। And last answer is above the 40-year on average। तो आंसर क्या आ गया, एवरेज ऑफ 2.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फिंगरप्रिंट्स। Fingerprints can dash that a suspect. Fingerprints can illustrate. Fingerprints can prove that, yes। Fingerprints को हम proof की तरह लेते हैं। Fingerprints can prove that a suspect was actually at the scene of a crime as long as a human entered a crime scene
there will be traces of DNA. DNA can help the police to identify. Identify करने में help करता है किसका? Police to identify an individual to crack a case. An institute in London can help dash DNA, can preserve DNA and be used to match with the dash taken from the crime scene, to match with the samples taken from the crime scene. So our first answer is proof. मीन्स फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं? प्रूफ होता है एक सस्पेक्ट को एक्चुअली जो सीन ऑफ अ क्राइम में वहां पर था. सेकेंड, ये हेल्प करता है पुलिस के टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल टू क्रैक द केस. थर्ड, लंडन कैन हेल्प preserve. An institute in London can help to preserve DNA, help preserve DNA. And last answer is samples. Can के बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और फर्स्ट आंसर इज कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, जितने भी मॉडल्स होते हैं उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. देन आवर सेकंड आंसर इज आफ्टर टू. टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट इज आइडेंटिफाई. थर्ड, कैन हेल्प डैश, कैन हेल्प प्रिजर्व डीएनए. कैन हेल्प, कैन के बाद भी हेल्प है तो हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. कैन के बाद भी अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. प्रोटेक्ट, प्रिजर्व डीएनए एंड बी यूज टू मैच विद द डैश सैंपल्स टेकन, जो सैंपल लिए गए हैं क्राइम सीन्स के. So our first answer is proof, second identify, third preserve, and fourth one is sample. Water security. Equally critical is the challenge of water security. The UN Environment Programme (UNEP) has pointed out that about one-third of the world's population lives in countries with moderate to high water stress, with a dash impact on the poor, with a disproportionate. डेफिनेटली जो लोग इलाइट फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको वो पानी की जो वाटर बॉटल है, चाहे वो 20 रुपीज की, चाहे 40 की है, चाहे 400 की है, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट इसका जो डिस्प्रपोर्शनेट इफेक्ट होता है वो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? Poors. With current projected global population growth, the task of providing water for human sustenance, definitely human को sustain करने के लिए क्या चाहिए? Water will become increasingly difficult, and increasing competition for the scarce but vital resource may fuel instability and conflict within states as well as between states. The UN is doing a great deal in both areas to proactively foster dash proactively foster collaboration, definitely foster collaboration among member states. जितने भी member states है उन सभी के बीच में foster collaboration होना चाहिए proactively. Proactively means कि बहुत ज्यादा active तरीके से. UNEP has long been actively addressing the water issue together with partner UN agencies and other organizations. Looking ahead, the UN can do more to build synergies of technology, policy, and capacity in this field. In this regard, events like the annual World Water Week in Stockholm come to the forefront of the public mind when taking about camping, camping water issues. So first answer is disproportionate. Your first answer is disproportionate. Second answer is sustenance. Third answer is collaboration. Fourth answer is agencies. And last answer is regard. Next question is about vipers. The home desert viper's ability to hunt at night has always puzzled biologists, though it lies with its dash. It lies with its head, buried under the sand. जो स्नेक होता है वो अपने वाइपर्स से को जब जैसे जब अपने हेड को सैंड के अंदर यूज करता है, रेत के अंदर, तो उसको पता चल जाता है आवाज का कि कोई भी पर्सन वहां से आ रहा है, कुछ भी कोई भी एक्टिविटी होती है. इट कैन स्ट्राइक विद ग्रेट प्रिसीजन एज सुन एज प्रे अपीयर्स. नाउ यंग and physicist Leo van Hemen and Paul Federer at the Technical University of Munich in Germany have developed a model of the snake's auditory system. Yes, snake auditory system. Auditory system is a collocation to explain how the snake hears its prey without really having the ear for it. Although the vipers have internal ears that can hear frequencies between 200 to 1000 hertz,
It is not the sound of the mouse scoring about that they are detecting. The snakes don't have external eardrums. The snakes don't have external eardrums, says Van Hamen. So, unless the mouse wears boots and starts stamping, the snake won't hear it. So, our first answer is had buried in the sand. First answer is had. Second one is auditory system. Third answer is external eardrums. In this question, we are talking about Cardona Salt Mountain. Formed 2 million years ago when two density salt was pushed up through the much harder materials surrounding it, the Cardona Salt Mountain is one of the largest domes of its kind in the world. The unique in Europe, while small amounts of other minerals pervade the savory hill, the salt pile dash. The salt pile would have a near transparent quality if not for the thin layer of reddish clay coating the exterior. The dash of the mountain, the significance of the mountain, जो उसका महत्व था mountain का, was recognized as early as the Middle Ages when Romans began exploiting the mountain for its salt, which began to bolster the young Cardonian dash with young Cardonian economy. Yes, जहां से स्टार्ट हुआ बोल्स्टर होना यंग कार्डेनियन इकोनॉमी का. With the invention of industrial mining techniques, a mine was built into the side of the mountain and thriving facility formed at its base as excavator dragged enormous amounts of potash, water soluble salt from the innards of the hill and dash to the mineral export. Addition, in addition to the mineral export, the locals of Cardona began making salt sculptures to sell and invented a number of hard, salty pastries unique to the area. So our first answer is would have salt pile would have a near transparent quality if not for the thin layers. Second answer is about the significance of the mountain. जो salt mountain था उसका significance क्या था? Third answer, उन्होंने स्टार्ट किया बूस्ट करना यंग कोरिडियन इकोनॉमी को. एंड फोर्थ आंसर इज इन एडिशन टू. इन एडिशन टू क्या होता है हमारा? कोलोगेशन भी होती है और हमारा कनेक्टर भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जापान एंड चाइना. At times, a border stream of knowledge dash from China to Japan. Border stream of knowledge flow हुआ from Japan, China to Japan. At other times, this transfer was dashed. This transfer was halted. Halted का मतलब होता है बंद हो जाना. From one side or the other, the Japan dash. The Japan developed by its own. जापान ने अपने आप को खुद ही डेवलप किया. Developed on its own culture, but whether in insulation or not, Japan was always itself everything that dashed China. That arrived from China was adapted. There are two words. One word is adapted and second one is adopted. Adapted means होता है जो कुछ भी चाइना से आया उन्होंने उसको as is adapt कर लिया, ऐसे ही ग्रहण कर लिया. To suit Japanese tastes and needs. So our first answer is फ्लो नॉलेज. नॉलेज का जो फ्लो था वो चाइना टू जापान की तरफ हुआ. सेकेंड, एक टाइम पे ये ट्रांसफर क्या रुक गया था. ट्रांसफर वाज हॉल्टेड. थर्ड आंसर, चाइना डेवलप ऑन इट्स ओन कल्चर. चाइना ने खुद का कल्चर खुद ही डेवलप किया और जो कुछ भी चाइना से आया अराइव फ्रॉम चाइना वाज अडेप्टेड टू सूट जापानीज टेस्ट्स एंड नीड्स. Next question is about DNA. DNA is a molecule that does two things. First, it acts as a dash material. It acts as a familial material. As a familial material काम करता है which is passed down from generation to generation. जो generation to generation pass होता है. Second, it directs to considerable extent the construction of our bodies, telling ourselves what kind of molecule to make and dash our development. To make and guiding, yes, to make and guiding a development from a single core zygote to a fully formed adult.
These two things are, this, of course, connected. Yes, these two things are, of course, connected. The DNA sequences that construct the best bodies are making likely to get passes down to the next generation because well-constructed bodies are more likely to survive and dash to reproduce, likely to survive and thus to reproduce. This is Darwin's theory of natural selection state the language of DNA. क्या कहा हुआ है? डीएनए की दो थिंग्स होती हैं. फर्स्ट, इट एक्ट्स एज अ फेमिएबल मटेरियल. सेकंड, ये जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता है. थर्ड, जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं टू मेक एंड गाइडिंग, मेक बनाते हैं और गाइड करते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल कॉल्ड जियोगोट अ फुली फॉर्म्ड एडल्ट. थर्ड, दीज टू थिंग्स, जो ये दोनों थिंग्स होती हैं जो डायरेक्ट करते हैं और जो फेलिएबल मटेरियल होता है, ये दोनों ही कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से. और फोर्थ आंसर है हमारा, ये सरवाइव करने के लिए और दस टू रिप्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है, जो डार्विन की थ्योरी में बताया गया है. सो आवर फर्स्ट आंसर इज फेमिएबल, सेकंड गाइडिंग, थर्ड कनेक्टेड, फोर्थ दस. Next answer is question is about Zika. Zika is more pernicious than public health officials anticipated. At present, it is circulated in more than 50 countries, and as of the midday, 7 countries or territories have produced cases of microcephaly of other serious birth defects linked to the virus. Zika is a type of virus जो 50 countries में फैला हुआ है, which dash by mosquitoes, which transmitted by mosquitoes. जो किससे ट्रांसमिट होता है? मॉस्किटो से. मॉस्किटो के बाइट करने से ट्रांसमिट होता है. Blood transfusion and sexual connect with an affected human. It can also be passed from mother to fetus during pregnancy. Despite Zika's vast dash, despite Zika's vast range, Zika की vast range होने के बजाय over the almost 70 years, there is a little genetic difference among the various strains. According to the analysis by researchers at the University of Texas Medical Branch at Galveston, for example, strain currently in Americas and another previously detected in French Polynesia are particularly indistinguishable. Indistinguishable means कि कोई खास डिफरेंस नहीं है. जो अमेरिका में जो वायरस है और जो फ्रेंच में जो वायरस है, दोनों सेम कैटेगरी के हैं. फ्रॉम ईच अदर ग्रुप इन व्हाइट बॉक्स. इफ द वायरस हैज चेंज्ड सो लिटिल, अगर वायरस थोड़ा बहुत कहीं पे चेंज भी हुआ है ओवर टाइम, व्हाई इट इज wearing its ugly hat now, scientists are not sure yet, but new experimental work in mosquitoes suggests that the virus was capable of dash detrimental health. The virus was capable of causing, yes, capable of causing detrimental health effects and outbreaks all along. Therefore, it is unlikely mutations enable new abilities. Instead, public health officials probably did not understand Zika's potential because the virus dashed mostly in remote locations until recently. Virus circulated. किसी को नहीं पता है कि वायरस कितना सर्कुलेट, पोटेंशियली कितना सर्कुलेट होगा, क्योंकि जहां जहां पर भी है वो कहाँ है? रिमोट लोकेशंस पर है. क्लियर? सो आवर फर्स्ट आंसर इज, जो जीका है एक टाइप ऑफ वायरस है जो ट्रांसमिटेड होता है मॉस्किटो बाइट से. सेकंड आंसर कहते जो जीका है वो वास्ट रेंज है उसकी, जीका वास्ट रेंज ओवर 70 इयर्स. थर्ड आंसर जो है हमारा particularly indistinguishable है from each other, मीन्स कि इन्होंने अमेरिका की बात की है, देन डिटेक्टेड इन फ्रेंच पोलिनेशिया, और दोनों ही जगह वायरस ऑलमोस्ट सेम है. देन फोर्थ आंसर है हमारा कॉजिंग डेट्रीमेंटल हेल्थ इफेक्ट्स. कहते जो वायरस है वो कैपेबल है डेट्रीमेंटल हेल्थ इफेक्ट्स देने में और उसका आउटब्रेक करने में. आउटब्रेक का मीन्स कि वो पूरी दुनिया में फैल जाता है एक टाइम को. एंड लास्ट आंसर है हमारा सर्कुलेटेड. कहते ये इतना पोटेंशियली इतना सर्कुलेट नहीं होगा क्योंकि जो जीका है वो मोस्टली रिमोट लोकेशंस पर जो लोग रहते हैं उन्हीं के वहां पे फैला हुआ है. Okay, in this question we are talking about sales jobs. Sales jobs allow for a dash deal of discretionary time and effort on part of the sales representatives. So sales jobs allow for a great deal of क्या होता है हमारा? collocation. A great deal of discretionary
time and efforts on the part of the sales representative, especially when compared with managerial manufacturing and service jobs. Most sales representatives work independently and outside the immediate presence of their sales managers. कई जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो फील्ड में काम करते हैं, सो वो सेल्स मैनेजर्स की प्रेजेंस में काम नहीं करते हैं. Therefore, some form of goals needs to be in place dash their performance in place to help and guide. Yes, we need something to do to help to motivate the sales representative as well as to guide them so they can accelerate their performance. So answer आया to help motivate and guide their performance. Sales personnel are not the only professionals with performance goals or quotas. कहते सिर्फ सेल्स पर्सोनल सेल्स में जो काम करने वाले लोग होते हैं सिर्फ वही ऐसे लोग नहीं है जिनको गोल्स और कोटास दिए जाते हैं परफॉर्म करने पड़ते हैं. Healthcare professionals operate in clinics, have daily, weekly, and monthly goals in terms of patient visits. कहते जो लोग हेल्थ केयर में काम करते हैं हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनको भी क्लिनिक्स में डेली बेसिस पे कितने पेशेंट्स की विजिट हुई है वीकली कितना हुआ है मंथली कितना हुआ है उनके भी अपने गोल्स होते हैं. Service personnel are assigned a number of service calls they dash during a set time period. They must perform. Yes, definitely. सभी को एक टाइम पीरियड दिया जाता है. They must perform during a set time period. वो टास्क उनको करने होते हैं. Production workers in manufacturing have output goals. So why are achieving sales goals for quotas such a big deal? The answer to this question can be found by examining how a firm's other departments are affected by how well the company's salesperson achieve their performance goals. The success of the business dash the successful sales of its products. Yes, definitely. The success of any business hinges on डिपेंड करती है किस चीज पे जो सक्सेसफुल सेल्स होती है of its products and services. Consider all the planning, financial and production and marketing efforts that go into प्रोड्यूसिंग व्हाट. क्या प्रोड्यूस करेंगे वो किस चीज पे डिपेंड करता है. द सेल्स फॉर सेल्स जो सेल फोर्स उसको बेच सकती हो. So everyone depends on the sales force to sell the company's products and services and they eagerly anticipate knowing things are going. So our first answer is a great deal of. A great deal of क्या होता है हमारी कोलोकेशन होती है. क्लियर. टू हेल्प मोटिवेट एंड गाइड. सेकंड आंसर हमारा है कि जो लोग इमीडिएट सेल्स मैनेजर के अंडर काम नहीं करते हैं बट वो परफॉर्म फिर भी करते हैं तो उनको भी मोटिवेशन के लिए और गाइड के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे हेल्प की जरूरत होती है. देन थर्ड आंसर मस्ट परफॉर्म मीन्स कि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है कहते हैं उनके ही गोल्स नहीं होते. जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनको भी हर किसी को जो काम करते हैं मस्ट परफॉर्म करना होता है. एक सेट टाइम पीरियड में अपने गोल्स को अचीव करना होता है. और एक जो सक्सेसफुल बिजनेस की जो सेल्स है वो उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के किस चीज पे हिंग्स ऑन होती है कि उनके सेल्स पर्सन कितने स्किल्ड हैं, कितना वो सेल्स को क्लिंच कर सकते हैं, कितना वो अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव बात कर सकते हैं, कितना अपने प्रोडक्ट को सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं. देन आवर लास्ट आंसर इज कि सभी जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं चाहे वो फाइनेंशियल प्रोडक्शन या मार्केटिंग है जब तक क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तब तक मैटर नहीं करता जब तक कि सेल्स फोर्स उसको बेच नहीं सकती. सो सेल्स फोर्स का होना अच्छा होना बहुत जरूरी है. सो आवर फर्स्ट आंसर इज ग्रेट. सेकंड टू हेल्प मोटिवेट एंड गाइड. Third, must perform. Fourth, thinks on. And last answer is producing what? Next question is about hairstyle. With their punk hairstyles and bright colors, marmosets and termites are among the most attractive primates on Earth. These fast-moving, lightweight animals live in the rainforest of South America. Their small size does it easy. The small size makes it easy. Small size क्या उनको easy करता है to perform the dart about the trees. To them dart about the trees. Trees पे बैठे रहते catching insects. Insects को पकड़ते हैं. Small animals such as lizards, frogs and snails. Marmosets have another unusual food dash. Unusual food source. Yes, definitely. उनके पास unusual food source होता है. वो क्या होता है? They use their chisel-like insource teeth to dig into tree bark. वो जो पेड़ का तना होता है उसके अंदर होल्स कर देते हैं and lap up the gummy sap जिसको हम गोंद बोलते हैं. उसको जो गमी शैप होता है लिक्विड जो आता है उसको वो खाते हैं and ships out living telltale
oval shaped hole in the desk when they have finished. Holes in the branches of the tree. Yes, holes in the branches when they have finished. But as the vast tracts of rainforest are cleared for the plantations and cattle ranches, कहते जब से रेन फॉरेस्ट को प्लांटेशन के लिए कैटल रेंचेस के लिए क्लियर किया जा रहा है, मार्मोशेट्स एंड टर्माइन्स आर इन सीरियस डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. तो वो क्या है, खतरे में है. सो आवर फर्स्ट आंसर इज स्मॉल साइज मेक्स इट इजी, मेक्स. सेकंड आंसर इज सोर्स, अनयूजुअल सोर्स की बात की है. ब्रांचेस में होल हो जाते हैं. फोर्थ आंसर इज जब से रेन फॉरेस्ट को प्लांटेशन और कैटल रेंचेस के लिए क्लियर कर रहे हैं तो वो सीरियस डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन का में आने वाले हैं. Our next question is about anesthetics. So, before effective anesthetics, surgery was little crude and very painful. कहते जब से इफेक्टिव एनेस्थेसिया यूज नहीं किया था तो वेरी क्रूड और पेनफुल होता था ऑपरेशंस करना. Before 1800, alcohol and opium had little success. Yes, definitely little success in easing pain during operations. लाफिंग गैस वाज यूज्ड इन 1844. लाफिंग गैस यूज किया, उससे मतलब जो इनका ऑपरेशन होता वो हंस तो रहे थे बट पेन तो हो रहा था. सो इन डेंटिस्ट्री इन द यूएसए but failed to ease all pain and patients remained conscious. पेशेंट्स का जो ऑपरेशन होता था वो बिल्कुल कॉन्शियस रहता था, अपने होशो हवास में रहता था. Ito, used from 1846, made patients totally unconscious and lasted for a long time. फिर ईथर यूज किया गया, उससे जो पेशेंट है वो टोटली अनकॉन्शियस हो जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था क्या चल रहा है उनके साथ और लॉन्ग टाइम तक ऐसे रहता था. हाउएवर इट कुड मेक्स पेशेंट कफ, लेकिन इससे पेशेंट को कफ होती थी ड्यूरिंग ऑपरेशंस. ऑपरेशन के टाइम पे उनको कफ होती थी और कफ की वजह से सिकनेस आना और कुछ भी स्टिचेस वगैरह में प्रॉब्लम होना वो बिल्कुल स्वाभाविक था. एंड सिक आफ्टरवर्ड. इट वाज हाईली फ्लेमेबल. ये क्या था, हाईली फ्लेमेबल भी था. एंड डैश इन हैवी ग्लास बॉटल्स एंड was transported, और इसको ट्रांसपोर्टेड किया जाता था हैवी ग्लास बोटल्स में. क्लोरोफॉर्म used in 1847 was very effective with few side effects. क्लोरोफॉर्म को काफी टाइम तक यूज किया गया क्योंकि वो इफेक्टिव थी लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स थे. हाउएवर इट वाज डिफिकल्ट टू गेट द डोज राइट. इसका क्लोरोफॉर्म का राइट डोज लेना बड़ा ही मुश्किल था. एंड कुड किल सम पीपल, और कुछ लोग इससे मर भी गए थे क्योंकि राइट डोज नहीं था पता था. बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑन देयर हार्ट, क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या करती है, हार्ट पे अटैक करती है. एंड इनहेलर हेल्प टू रेगुलेट द डोसेज. सो आवर फर्स्ट आंसर इज लिटिल सक्सेस. अल्कोहल ओपियम में उनको लिटिल सक्सेस मिली. देन रिमेन्ड कॉन्शियस. जब सेकेंड टाइम लाफिंग गैस का यूज किया गया तो पेशेंट क्या होता था, रिमेन्ड कॉन्शियस रहता था. थर्ड, जो ईथर यूज किया गया था वो हाईली फ्लेमेबल था और उसको ट्रांसपोर्टेड इन हैवी ग्लास बोटल. सो ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है हैवी ग्लास बॉटल्स में. एंड लास्ट आंसर इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑन देयर हार्ट. क्लोरोफॉर्म यूज हुआ काफी टाइम तक बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे क्योंकि समटाइम्स का राइट डोज का पता नहीं चलता था. Our next question is about Australia higher education funding. Financing of Australia's higher education has undergone dramatic change. Yes, definitely dramatic change है Australia के financing of Australia higher education में since the early 1970s. Although the Australian government provide regular funding for universities from the late 1950s, in 1974 it adjourned. Yes, definitely. कहते 1974 में एक ऐसा टाइम आया तो सभी ने सोचा सब कुछ गवर्नमेंट ही करेगी. It adjourned full responsibility for funding their higher education. Abolishing tuition fees को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया with the intention of making university education affordable to all Australians who had ability, जिनके अंदर ability है या फिर who wish to participate in higher education. Since the late 1980s, there has been a move towards greater private contributions. 1980s में कुछ private contributions भी आए. Student fees, particularly student fees, particularly किस section को लेकर, students की fees को लेकर. In 1989, the Australian government introduced the Higher Education Contribution Scheme. HECS was included a loan scheme to help students finance their contributions. This enabled university to remain accessible. Yes. University क्या रहे, accessible रहे, use कर सके student to delaying their payments until they could afford to pay off their loans.
और कहते भाई जब पैसा आ जाए तब पे कर देना, डिले कर सकते थे लोन्स। सो जब हम कोई चीज डिले कर सकते हैं तो क्या होता है, पेमेंट्स में रिकवरी में प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लियर? सो इन 2002 द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डैश अ सिमिलर स्कीम, इंट्रोड्यूस्ड अ सिमिलर स्कीम। फिर उन्होंने 2002 में एक नई स्कीम को लॉन्च की जिसका नाम था, similar to HECS for postgraduate students, the Postgraduate Education Loan Scheme (PELS). Funding for higher education comes from various sources. This article examines the three main sources: Australian government funding, student fees and charges, and HECS. While the proportion of total debts, portion total revenue, yes. Portion of total revenue, revenue means जो इनकम आई थी रेज थ्रू एचईसीएस की जो स्कीम थी उससे क्या है, पेमेंट जो रेवेन्यू था बहुत कम आया था, रिलेटिवली स्मॉल। क्यों स्मॉल था? क्योंकि उनका जो क्लॉज था उसमें ये था कि भाई जब स्टूडेंट्स के पास पैसे आ जाएंगे वो तभी पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स के पास तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद भी काफी टाइम के बाद तक पैसे नहीं आए, तो उन्होंने पेमेंट्स भी नहीं की। सो इसीलिए वो क्या है, उसे HECS से बहुत कम फंडिंग उनको मिली। HECS payments are significant component of students' university costs, with many students carrying a HECS debt for several years after leaving university. यूनिवर्सिटी के सालों साल बाद तक भी उनका वो लोन ऐसे ही रहा। दिस आर्टिकल आल्सो फोकसेस ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स of university students based on their HECS liability status in level of accumulated HECS debts. So our first answer is changed, second is assumed, for third particularly, fourth accessible, fifth introduced, last revenue. पूरा जो क्वेश्चन है उसकी समरी क्या है, जो ऑस्ट्रेलियन हायर एजुकेशन है उसकी फाइनेंशियल को ड्रामेटिक चेंज आई, जो हमारा फर्स्ट आंसर है 1970 में। फिर 1970 में इट अज्यूम्ड फुल रिस्पांसिबिलिटी, पूरी रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की ही समझ ली गई। फिर 1980 में एक स्कीम आई पर्टिकुलरली स्टूडेंट फीस को लेकर। फिर फोर्थ आंसर में उन्होंने ये स्कीम इसलिए इनेबल किया था ताकि यूनिवर्सिटी एक्सेसिबल रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए। देन नेक्स्ट में फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नई स्कीम को जिसका नाम था PELS। एंड लास्ट HECS से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो बहुत ही कम। क्लियर? प्लीज आप सभी प्रैक्टिस करना है इसको एक बार खुद से भी, आप किसी भी पोर्टल पर जाकर प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को। जब आप खुद के हाथों से आंसर्स को ब्रेक करेंगे तो आपके आंसर्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। डेविड लिंच। David Lynch is professor and head of education at Charles Darwin University. Dash to this, prior to this, yes, prior to this, he was sub-dean in the Faculty of Education and Creative Arts of Central Queensland University and foundation head of University Noosa campus. यहाँ पे campus का C कैपिटल आएगा फाइनल एग्जाम में जो आपका ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी नूसा कैंपस सब कुछ कैपिटल में है। सो और फर्स्ट आंसर क्या है, प्रियोर। जो डेविड लिंच थे वो एक प्रोफेसर है, आजकल क्या कर रहे हैं, हेड ऑफ द एजुकेशन एट चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी है। इससे पहले प्रियोर टू दिस, इससे पहले क्या थे, वो सब डीन थे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के क्रिएटिव आर्ट्स एट सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, और फाउंडेशन हेड थे यूनिवर्सिटी नूसा कैंपस के। फाउंडेशन हेड मींस की यूनिवर्सिटी नूसा कैंपस उन्होंने ही स्टार्ट किया था। David's career in education began as primary school teacher in Queensland in the early 1980s and dashed to four principal positions and proceeds and progressed to four principal positions। और उन्होंने फोर प्रिंसिपल पोजीशंस पे क्या किया, प्रोग्रेस किया बिफोर डैश हायर एजुकेशन, बिफोर एंटरिंग, यस डेफिनेटली एंटर करने से पहले हायर एजुकेशन में। डेविड रिसर्च इंटरेस्ट प्रीडोमिनेट इन टीचर्स एजुकेशन with particular interest in building teacher capability to meet a changed world. So our first answer is David Lynch। प्रियोर क्या थे, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी से पहले वो यूनिवर्सिटी नूसा कैंपस के फाउंडेशन हेड थे और क्रिएटिव आर्ट एट सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ एजुकेशन थे। देन थर्ड आंसर है हमारा प्रोग्रेस्ड टू फोर प्रिंसिपल पोजीशंस बिफोर एंटरिंग हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में एंटर करने से पहले वो फोर प्रिंसिपल पोजीशंस में प्रोग्रेस कर चुके थे। So our first answer is prior, second campus, third progressed, and fourth answer is entering. In this question, we are talking about video conference.
Never has the carbon footprint of multinational corporations been under such intense scrutiny. Just give me a minute. In this question, we are talking about video conference. Never has the carbon footprint of multinational corporations been under such intense scrutiny. Intercity train journeys and long-haul flights to dash face-to-face business meetings contribute significantly to greenhouse gases and ओके कार्बन फुटप्रिंट्स जो आ रहे हैं CO2 जो एमिट हो रहा है वो कहते हैं कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है उनको फेस टू फेस बिजनेस मीटिंग्स के लिए लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स लेनी पड़ती है और इंटरसिटी ट्रेन जर्नी करनी पड़ती है टू डैश टू कंडक्ट फेस टू फेस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए एंड द रिजल्टिंग स्ट्रेन ऑन द इन्वायरमेंट और उसका क्या होता है रिजल्टिंग स्ट्रेन इन्वायरमेंट के ऊपर धब्बा लगता है इन्वायरमेंट खराब होता है द एंट्रो US company Talrish has introduced a new video conferencing technology and partnered with the carbon neutral company, enabling corporate outfits to becoming more environmentally responsible. So, दो कंपनी सामने आई और environmentally responsible होने के लिए उन्होंने साथ में काम किया. The innovation allows stimulated face-to-face meetings to be held across continents without the time pressure or environmental burden on the international travel. और जो नया इनोवेशन था उसने अलाउ किया कि सभी को स्टिमुलेट करे सभी को परसुएड करे इन्फ्लुएंस करे फेस टू फेस मीटिंग्स के लिए अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका सो अक्रॉस ऑल द कॉन्टिनेंट्स विदाउट एनी टाइम प्रेशर बिना किसी टाइम प्रेशर के हम मीटिंग्स रख सकते हैं और इन्वायरमेंटल बर्डन नहीं होगा इंटरनेशनल ट्रेवल का Previous design have enabled video conferencing on a point-to-point dual location basis. जो पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो डिजाइन था वो पॉइंट टू पॉइंट ड्यूअल लोकेशन बेसिस पे था द फर्म्स वर्चुअल लाइव टेक्नोलॉजी जो फर्म की वर्चुअल लाइव टेक्नोलॉजी आई हाउएवर कैन ब्रिंग पीपल हाउएवर फ्रॉम अप टू 5 सेपरेट लोकेशंस 5 अलग अलग लोकेशंस पे एनीवेयर इन द वर्ल्ड with dash transmission quality with unrivaled transmission quality unrivaled means कि बिना किसी कंपटीशन के So our first answer is to conduct face-to-face meeting. To conduct. To के बाद हमेशा verb की first form आती है. Next, our second answer is resulting strain. Resulting strain हमारा क्या होता है? Collocation. Then third answer is without the time pressure. हम कहीं पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं तो कोई भी टाइम प्रेशर नहीं होता इन्वायरमेंटल पे कोई बर्डन नहीं होता सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट टू पॉइंट बेसिस था और बाद में इसको 5 सेपरेट लोकेशंस पर रखा गया था एंड लास्ट आंसर इज अबाउट अनराइवल्ड ट्रांसमिशन क्वालिटी जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो भी एक दूसरे से प्रभावित नहीं होगी सो हर जगह अपनी अपनी कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंगली हम काम कर सकते हैं सो our first answer is conduct second one is strain third answer is pressure fourth separate and last answer is unrivaled next question is about natural capital capital has often been thought of narrowly as physical capital the machines tools and equipment used in the production of other goods but our health and well-being also dash natural capital our wealth and well-being also relies on जो हमारे wealth और capital है wealth और well-being है वो किस पे rely करता है नेचुरल कैपिटल के ऊपर अगर हम नैरोली फिजिकल कैपिटल की बात करें हमें लगता है मशीन टूल्स वही कैपिटल है बट जो हमारी वेल्थ और फिजिकल वेलबींग है वो भी क्या है रिलाय करती है हमारी नेचुरल कैपिटल क्या होता है अगर हम नेचुरल कैपिटल को भूल जाते हैं इफ वी फॉरगॉट दिस वी रिस्क डिग्रेडिंग द सर्विसेज हम रिस्क में रहेंगे डिग्रेड करेंगे सर्विसेज को जो नेचुरल इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करता है विच डैश आर इकोनॉमीज विच सपोर्ट आर इकोनॉमीज जो हमारी इकोनॉमीज को सपोर्ट करता है हर जगह से मदद करता है एंड सस्टेन आवर लाइफ और हमारी लाइफ को सस्टेन करता है These services include purifying our water जो ये सर्विसेज है हमारी वाटर को प्योरीफाई करते हैं डैश का क्लाइमेट regulating our climate को रेगुलेट करते हैं reducing flood risk and pollinating our crops the natural capital project a partnership among WWF the Nature Conservancy University of Minnesota and Stanford University works to provide decision makers with dash ways reliable ways ऐसे तरीके हों जो क्रेडिबिलिटी हो जिसमें जो रिलायबल हो जो रिस्पॉन्सिबल हो जो विश्वसनीय हो टू assess the true value of services that ecosystems provide an essential element of natural capital project is developing tools that help decision makers protect biodiversity and ecosystem services so our first answer is
कि जो हमारा वेल्थ है और वेलबींग है वो रिलाइज ऑन नेचुरल कैपिटल। तो आवर फर्स्ट आंसर इज रिलाय ऑन किस पे करता है, नेचुरल कैपिटल पे। सेकेंड आंसर इज जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो हमें सपोर्ट करता है हमारी इकोनॉमी को अपग्रेड करने में और सस्टेन करने में हमारी लाइफ। तो हमारा सेकेंड आंसर है सपोर्ट। थर्ड आंसर इज रेगुलेटिंग आवर क्लाइमेट। जो हमारी नेचुरल इकोसिस्टम है वो हमारे वाटर को प्यूरिफाई करता है, रेगुलेट करता है, क्लाइमेट को रिड्यूस करता है, फ्लड रिस्क को। सो देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। सो थर्ड आंसर इज रेगुलेटिंग एंड फोर्थ आंसर इज अगर हमें कहीं भी लग रहा है कि वो नेचुरल कैपिटल हमारी कहीं ना कहीं हार्म हो रही है तो उसके लिए हमें नए नए तरीके यूज करने चाहिए जो रिलायबल हो उस चीज को करने के लिए। Our next question is about settlement. Over the last 10,000 years, they seem to have two separate and conflicting building sentiments throughout the history of towns and cities. Dash is the desire to start again. Yes, one is the desire to start again. अगर किसी का मन होता है उस चीज को दोबारा स्टार्ट करें for a variety of reason, बहुत सारे कारण हो सकते हैं. An earthquake or tidal wave may have demolished the settlement. में भी हो सकता है किसी नेचुरल क्लामिटीज की वजह से वो सेटलमेंट खराब हो गया हो, डिमोलिश हो गया हो, नष्ट हो गया हो, और फायर डिस्ट्रॉयड इट, और द न्यू सिटी डैश अ न्यू पॉलिटिकल बिगिनिंग. न्यू सिटी मार्क्स, न्यू सिटी क्या करेगी, मार्क करेगी नई पॉलिटिकल बिगिनिंग को. द अदर कैन बी लिंक्ड टू द effect of a magnet established settlement attract people who dash to come whether who tend, yes, who tend to come whether or not there is any planning or their arrival. उनके आने की कोई प्लानिंग हो या फिर ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. So who tend to come, जो आना चाहते हैं. The clash between these two sentiments is evident in every established city dash its development unless its development has been almost completely accidental or lost in history. Incidentally, many settlements have been planned from the beginning, but for a variety of reasons, no settlement followed the plan. A good example is Kerawan on the Clyde River in the New South Wales, which dashed in the second half of the 19th century, which was surveyed. जो surveyed हुआ second half of the 19th century in expectations that people would come to establish agriculture and small port, but no one came. उन्होंने स्टार्ट किया था कि लोग एग्रीकल्चर के लिए वहां पे आए और स्मॉल पोर्ट को वहां पे इस्टेब्लिश करें, बट वहां पे कोई नहीं आया. So our first answer is 1, second one is marks, third is tent, fourth unless, and last is was surveyed. The next question is about sales activities. Organizations need to integrate their sales activities more both internally and with customers' needs according to new book co-authored by an academic at the University of East Anglia. The book Depth. The book यहाँ पे क्या है, सिंगुलर हमारा जो सब्जेक्ट है, so it means यहाँ पे वर्ब के साथ s और es आएगा. So the book addresses, बुक में क्या बताया गया है, the book addresses how sales can help organizations to become more customer oriented. कहते किस तरह से बुक में ये बताया कि सेल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से हेल्प करता है कस्टमर ओरिएंटेड होने के लिए, and considers how they are responding to challenges such as increasing competition, more dash customers, more demanding customers, and a more complex selling environment. Many organizations are facing escalating cost. Escalating means कि increasing cost को face कर रही हैं बहुत सारी organization, and a growth in customer power that makes it necessary, which makes it necessary. Product और service को क्या है, necessary कर रहा है to allocate resources more strategically. रणनीति बनाकर करें. The sales function can provide critical customer and market knowledge to help inform both innovation and marketing. However, the authors say that within the industry, that it's still uncertainly. Within the industry, there is still uncertainly. अनसर्टेनिटी होती है. अनसर्टेनिटी मीन्स कि हम बता नहीं सकते इन फ्यूचर क्या होने वाला है. बहुत सारी चीजें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. So about the shape a future sales team should take, how it should be managed, and how it dash into their organization's business model, how it fits, कि ये fit बैठेगा या नहीं बैठेगा into their organization's business model. So our first answer is addresses,
Second one is demanding customers. Third, which, fourth, their, and last fits. जो हमारा थर्ड आंसर है which, हमेशा जब भी आपका कोई भी ब्लैंक आएगा which, where, that, this, अगर ऐसे कोई भी चार ऑप्शन है, अगर W वाली फॉर्म आएगी तो इट मींस उस ब्लैंक से पहले कोमा लगा हुआ होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए कस्टमर पावर कोमा which makes it, जो इसको बनाएगा to allocate resources more strategically। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ये आपके फाइनल एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। Our next question is about herbal. A herbal is a book of plants describing their appearance, their properties, and how they may be used for preparing ornaments and medicines. The medical use of plants is dash. The medical use of plant is recorded on fragments of papyrus and clay tablets from ancient Egypt, Sumeria, and China that date back 5,000 years, but documents traditions far older still. Over 700 herbal remedies were detailed in the Papyrus Abors, an Egyptian text written in 1500 BC. Around 65 BC, a Greek physician called Dioscorides wrote a herbal that was dashed into Latin, that was translated, जो translate किया गया था, convert किया गया था Latin and Arabics में, known as De Materia Medica, उसका नाम था ये De Materia Medica. It became the most influential work on medicinal plants in both Christian and Islamic worlds until the late 17th century. An illustrated manuscript copy of the text made Constantinople, modern-day Istanbul, dash from 6th century, survives from 6th century, and the first printed herbals date from the dawn of European printing. जो फर्स्ट प्रिंटिंग हुई थी हर्बल्स की डेट फ्रॉम द डॉन ऑफ यूरोपियन प्रिंटिंग। डॉन ऑफ यूरोपियन प्रिंटिंग मींस यूरोप में जब प्रिंटिंग का काम स्टार्ट हुआ था। In the 1480s, they provided valuable information for apothecaries whose job was to make the pills and potions dash by physicians. By से पहले हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, prescribed by the physicians. So our first physicians in the next century landmark herbals were produced in England by William Turner, considered to be the father of British botany, and John Grant, whose illustrations would inspire the floral fabric, wallpaper, and tiles designs of William Morris 4 centuries later. So our first answer is recorded, कि जो medical use of plants था वो record किया गया था papyrus और clay tablets में ancient Egypt, Sumeria और China में। देन जो हर्बल्स थे उनको ट्रांसलेट किया गया था लैटिन और अरेबिक लैंग्वेज में। दैट इज आवर सेकंड आंसर। थर्ड आंसर, जो सरवाइव कर रहे थे, जो चेंजेस हुए थे 6th सेंचुरी से काफी लंबे टाइम तक 17th सेंचुरी तक। देन जब फर्स्ट हर्बल को प्रिंट किया गया था उस टाइम यूरोपियन प्रिंटिंग का सिर्फ उदय ही हुआ था, और जितने भी पिल्स और पोशंस थे उनको पहले प्रिस्क्राइब किया जाता था फिजिशियंस के द्वारा। So our first answer is recorded, second translated, third survives, fourth prescribed. Our next question is about caption. Here's a possible blood dash. Possible blood pressure. Yes. Blood pressure क्या होता है हमारा? Collocation होती है. So blood pressure remedy, but it's only for those who can stand that heat. Its caption, the active ingredient in peppers. कहते जो active ingredient होता है peppers में, like herb notes that should probably be sold by prescription only. So सिर्फ prescription के बाद ही उसको sold out किया जाता है. While lips burn and eyes water, blood vessels dash relax. Blood vessels actually relax. Blood vessels वहाँ पे क्या करते हैं? Actually relax करते हैं. Thanks to increased dash. Thanks to increased production. Thanks to increased production of the signaling molecule nitric oxide in rodents. Rodents क्या होता है? जैसे rats. Anyway, for 7 months, Dash in China fed a steady diet of capsaicin to rats. And for 7 months, Dash in China, researchers in China, जो researchers है China में, fed कर रहे हैं steady diet capsaicin की rats को
For hypertensive, long-term consumption of the chemical does lower the rat's blood pressure. अगर हम लॉन्ग टर्म से कंज्यूम करा रहे हैं रेट्स को वो केमिकल डैश लोअर सब्सटेंशियली, धीरे धीरे क्या करता है उसको ब्लड प्रेशर को लोअर करता है. द रिजल्ट्स अपीयर्स इन द ऑगस्ट इशू ऑफ द जर्नल सेल मेटाबॉलिज्म. प्रीवियस रिसर्च फाउंड मिक्स्ड रिजल्ट्स. कहते जो पहले वाले रिजल्ट हैं, जो पहले वाले रिसर्च हुई हैं उनके रिजल्ट्स क्या है, मिक्स्ड आए हैं विद कैप्सेशन. बट दो स्टडीज ओनली लुक्ड एट डैश इफेक्ट्स, लुक्ड एट शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स. यो द short term effects, human trials are needed, but there's already a clue. Some 20% of people in northeastern China have high blood pressure, but the southwest, where hot peppers are a dietary staple, has a much lower incidence. Half in some places, human studies also confirm whether the herpinro, as legend has it, can cause hearing loss, allegedly, so that diners don't have to listen to their own screams. So our first answer is blood pressure. Blood pressure क्या होता है हमारा, कोलोकेशन होती है. Then our next answer is actually relax. जब हमारी आईज बर्न होती हैं, आईज वाटर करती हैं, लिप्स बर्न होते हैं, तो क्या होता है एक्चुअली हमारी जो वेसल्स होती है वो रिलैक्स करती हैं. देन इंक्रीज प्रोडक्शन किस चीज का, मोलिकुलर नाइट्रिक ऑक्साइड का. देन आवर फोर्थ आंसर इज रिसर्चर्स इन चाइना. देन फिफ्थ आंसर सब्सटेंशियली लोअर द रेट्स ब्लड प्रेशर. जब हम लॉन्ग टर्म में कंजम्पशन करवाते हैं इस केमिकल का रेट्स को, तो उनका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है. एंड द लास्ट आंसर इज समटाइम जो रिजल्ट्स हैं वो मिक्स्ड भी आते हैं. कब आते हैं, जब हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स को देखते हैं, कुछ टाइम कंज्यूम करवाने के बाद हम उसका असर देखते हैं, तो वहां पे शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या है, हमारे ऊपर नीचे हो सकते हैं. मे बी हमें लगे कि ब्लड प्रेशर लोअर होगा, बट हम चेकआउट करते हैं तो वो ज्यादा हुआ होता है. सो दैट इज द मिक्स्ड रिजल्ट्स वहां पर आते हैं. Our next slide is about philanthropists. 40 years ago, yesterday, November 24, 1974, philanthropist Donald Johnson found in Ethiopia what's arguably the most famous and important fossil on a human ancestor. उनको क्या है, एक फॉसिल मिला ह्यूमन एंसेस्टर का जिसका नाम था लूसी. लास्ट मंथ एट द साइंस राइटर्स 2014 meeting in Columbus, Ohio, Johnson talked about the moment he laid eyes on Lucy. कहते जब जॉनसन बात कर रहे थे, उनकी आईज क्या लूसी के ऊपर थी. ऑन द eventful day in 1974, I was out with a graduate student Tom Day, and we were walking back to our Land Rover to go back to camp to enjoy a swim in the river with crocodiles and enjoy a nice little lunch. And I am always looking at the ground. I find more quarters by parking meters than anybody I know, I think. And you know how it is, you find what you are looking for it, right? Because a year before the dash a geologist, because a year before the dash, the discovery, yes, the discovery, a geologist had left his footprints 4 to 5 feet away from the desk, from the skeleton. जो skeleton मिला है लूसी का, वहां पे 4 to 5 feet उनको क्या मिले, footprints मिले एक geologist. Because he was looking for rocks, it was looking for bones. And I found a little piece of elbow, the little dash that elbow, hing, the little hing that elbow us to flex and extend our arm. And I know from my studies of osteology, of comparative anatomy and so on. उन्होंने anatomy means क्या होता है, किसी चीज का structure. कहते हैं as a study, my studies in the osteology, मैं osteology study कर रहा हूँ, तो मेरी जो comparative anatomy है, and so on, that this had to be from a human ancestor, कि मुझे लगा ये एक human ancestor है. And as I looked up the slope, I saw other dash eroding out. I saw other fragments. तो मैंने देखा दूसरे fragments भी eroding out हो रहे हैं वहां पर. And we recovered over a 2-week long excavation
operation, roughly not counting hand and foot bones, 40% of a skeleton. And this was important because, first of all, it broke the 3 million year time barrier. All the fossil older than 3 million years at the point in the history of Anthropology would fit in the palm of your hand. We didn't know it was a new species really until a few years later finally dash in 1978 when we finally published. कब publish किया 1978 the name Astrophysics, whatever it is. For more, check out the blog item on our website by scientific Americans Kate Wong, who with Johnson co-authored the book Lucy's Legacy. Kate's blog is titled The Fossil That Revolutionized the Search for Human Origins, a question and answer with Lucy discoverer Donald Johnson. So our first answer is human ancestor. Second, the डिस्कवरी किसने की थी? जियोलॉजिस्ट ने, और 4 से 5 फीट पे उनके क्या मिले थे? स्केलेटन के पास उनके फुटप्रिंट मिले थे. Then in the next answer, our fourth answer is hing, that little hing, that elbow. And next answer is fragments, means कि वहां पे कुछ दूसरे fragments भी थे जो उसको eroding out कर रहे थे. And at last they finally published, the skeleton finally published in 1978 with the name of this. So our first answer is ancestor, second discovery, third skeleton, fourth hing, fifth fragments, and last answer is published. Next question is about longevity. Egg eating snakes are small group of snakes whose diet, yes, egg eating जैसा कि इसका नाम suggest कर रहा है, whose diet consists only of eggs. Some eat only small eggs which they have to swallow whole. मीन्स कि कुछ जो सम ईट, कुछ जो स्नेक्स होते हैं वो स्मॉल एग्स खाते हैं जो एज इट इज निगल जाते हैं. एज द स्नेक हैज नो टीथ, इंस्टेड सम अदर स्नेक्स ईट बिगर एग्स, बट इट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रीटमेंट. उसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है? स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है. These snakes have spines that stick out जैसे कि एकदम से मुंह से निकला है तो उससे क्या होता है? स्टिक आउट भी हमारी क्या है? कोलोकेशन है. फ्रॉम द बैकबोन द स्पाइन्स क्रैक dash. The spine crack open the egg as it passes through the throat. So our first answer is diet, second hole, third answer is treatment. Special treatment is a collocation, and again stick out again collocation, and crack open the egg. Spine crack करते हैं egg को और वो open the egg open हो जाता है, then passes through the throat. Then our next answer question is about impressionist. Australian Impressionism was a 19th century art movement that began as a loose association of Paris-based artists who started publicly exhibiting their art in the 1960s. ऑस्ट्रेलिया में जो इम्प्रेशनिज्म का दौर था वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, 1860s में, लेट 19th सेंचुरी में. Characteristics of impressionist painting include visible brush strokes, light colors, open composition, dash on light. कहाँ पे फोकस किया जाता था? So focus, emphasis, yes. Focus, emphasis, both are the same synonyms. So emphasis on light in its changing qualities, open and accelerating the effects of passage of time, ordinary subject matter and unusual visual angles. The name of the movement dash. The name of the movement is derived. जो नाम था movement का वो किसको लेकर किया गया था? फ्रॉम कोलार्ड मोनेट इम्प्रेशन. मीन्स कि जो इम्प्रेशनिज्म थे, जो इम्प्रेशनिस्ट थे, उनमें कोलार्ड मोनाट जो थे उनका बहुत अच्छा नाम था और उन्हीं के नाम से ये पेंटिंग्स का नाम ड्राइव किया गया. सनराइज इम्प्रेशनिज्म, सोयल लेवेंट. क्रिटिक लुइस लोएरी inadvertently coined the term in a satiric review. Satiric review means कि irony, व्यंग के तौर पे उन्होंने कहा. Published in the Chevry, radical in their time, early impressionists broke the rules of academic painting. उन्होंने क्या कहा? जो early impressionist है उन्होंने rules को तोड़ा है जो academic painting के थे. They began by giving colors. उन्होंने क्या colors को check किया? Freely brushed primacy over line.
Drawing dash from the work of painters. Drawing inspiration, yes. Drawing inspiration from the work of painters such as Iglis Deluxix. They also the dash. They also took the act जो काम था पेंटिंग का आउट ऑफ स्टूडियो. They also took the act of painting जो काम करना था पेंटिंग का वो आउट ऑफ द स्टूडियो ले गए एंड इनटू द वर्ल्ड. मीन्स कि उन्होंने ओपन एयर में नेचुरल पेंटिंग्स बनानी स्टार्ट की. जो स्टार्टिंग में लोग पेंटिंग बनाते थे वो एक बंद कमरे में बैठ के एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बनाते थे, बट उन्होंने क्या है नेचुरल पेंटिंग्स बनानी स्टार्ट की. फ्रॉम द वर्क पेंटर्स सच एज Iglis Douglas, they also looked the act of painting out of the studio into the world. Previously, not only still lifes and portraits, but also landscapes had been painted indoors. But the impressionists found that they could dash. They could के बाद क्या आएगा verb की first form. They could dash. They could capture. Yes, they could capture the momentary and transient effects of sunlight by painting air in plain air. So our first answer is emphasis on. Emphasis के साथ हमेशा on आता है, तो ये हमारी collocation है emphasis on. Second answer is movement is derived from. किसी का नाम दिया हुआ है, किसी के नाम को लेकर बनाई हुई है. Impressionist जो थे कोलार्ड मोनेट वो बहुत ही फेमस थे impressionist के टाइम पे. Then our third answer is inspiration from the work of painters. कहते जो drawing थी वो inspiration ले रही थी work of painters से. Then our fourth answer is they also took. Look, they also took means they किसके लिए impressionists के लिए. वो उन्होंने क्या किया जो एक्ट ऑफ पेंटिंग थी उसको आउट ऑफ स्टूडियो लेकर गए इनटू द रियल वर्ल्ड और वहां पे नेचुरल पेंटिंग्स बनानी स्टार्ट की. could capture the momentary and transit effects. So our first answer is emphasis, second one is derived, third inspiration, fourth act, and last answer is capture. Next question is about Pinko. In a sequence of bestsellers, including The Language Instinct and How the Mind Works, Pinker has argued thus with us of our mental, social, and emotional lives may have dash. Has, have, had के बाद क्या आएगा verb की third form. Has originated, yes, have originated as evolutionary adaptation. मीन्स कि जो हमारा नेचुरली हम किसी भी चीज को सोशली मेंटली इमोशनली किसी भी चीज को अडेप्ट करते हैं तो वो क्या होता है ओरिजिनेटेड एज एवोल्यूशनरी. मीन्स की पीढ़ी दर पीढ़ी टाइम टू टाइम वो चीजों में चेंजेस आते रहते हैं. वेल सूटेड टू आवर लाइफ और एंसेस्टर्स. जैसे हमारे एंसेस्टर्स की लाइफ कैसी थी उसमें धीरे धीरे इतना चेंज हो जाता है. अगर हम 200-300 बैक्स देखते हैं तो बिल्कुल टोटली चेंज लगता है, बट जब हम सर्वाइव कर रहे होते हैं धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता कि कुछ चेंज हो रहा है. सो यहाँ पे हैव ओरिजिनेटेड एज एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस. Well suited to the lives of our ancestors, eked out on the planetary savanna. Sometimes it seems as if nothing is immune. Yes, immune system होता है जैसे हमारा, तो sometimes लगता है is nothing to immune. कुछ भी immune की जरूरत नहीं है. From being explained this way, road rage, adultery, marriage, altruism, our tendency to reward senior executives with corner offices on the top floor and smaller number of women who become mechanical engineers. All may have their dads, all may have their roots. Yes, all may have their roots in natural selection. Definitely, वो कुछ अलग करना चाहते हैं. So roots in their natural selection. Pinker claims the controversial implications are obvious. अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी होना तो बहुत ही ऑब्वियस है. अगर कोई विमेन मैकेनिकल इंजीनियर बनेगी तो अपने काम के अलावा कुछ और करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे कंट्रोवर्शियल इम्प्लीकेशंस आएंगे. That men and women might differ in their own ability at performing certain tasks. क्योंकि लोग समझते हैं जो मैन और विमेन्स होते हैं वो अलग अलग कामों के लिए बनाए गए हैं. For example, of that parenting may have little influence on personality. Means कि जो हमारा पालन पोषण है जो हमारी अपब्रिंगिंग है उसका इस पे थोड़ा सा ही असर पड़ता है. सो आवर फर्स्ट आंसर इज ओरिजिनेटेड, हैव ओरिजिनेटेड, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. नथिंग इज इम्यून. देयर रूट्स इन नेचुरल सिलेक्शन. डेफिनेटली अगर कोई कुछ अलग से करना चाहता है तो वो रूट्स वो अर्ग वो डिजायर उनकी बचपन से ही होती है. देन डिफर इन देयर इनबोर्न एबिलिटीज. कुछ लोग मानते हैं कि जो मैन और वुमेन है वो डिफर होते हैं इनबोर्न एबिलिटीज से. और जो हमारी इन्फ्लुएंस जो करता है हमें पेरेंटिंग मीन्स जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है उस पर उसका लिटिल इफेक्ट होता है.
So our first answer is originated, second one immune, third one roots, fourth one differ, and last answer is little. Start reading and writing, fill in the blanks. First of all, we start with Kath Haring. Hello students, today we start reading and writing, fill in the blanks. First of all, we start with Kath Haring. Kath Haring began as an underground artist. Literally, his first famous project were pieces of stylized graffiti. जो उनका पहला famous project था वो क्या था? Pieces of stylized graffiti dash in New York subway stations. जो कहाँ पे क्या हुआ था? Drawn. Yes, drawn in New York. New York में drawn हुआ था subway stations. Herring traveled from station to station. Herring ने station to station travel किया, drawing with chalk and chatting with commuters about his work. These doodles helped him to develop his classic style, and he grew so dash. He grew so prolific. Prolific means तेजी से बढ़ना किसी चीज का. He grew so prolific, doing up to 40 drawings a day. एक दिन में ही 40 ड्राइंग्स करते थे. दैट इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर फेम एंड मेजर टू फॉर्च्यून फॉलो. कहते हैं उनको फिर बहुत सारा फेम मिला, बहुत सारा फॉर्च्यून मिला. Soon, galleries and collectors from the art establishment wanted to buy full-sized pieces by Haring. The painting skyrocketed in price. जो पेंटिंग के जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे. But this did not sit well with Haring's philosophy. लेकिन हैरिंग की फिलोसफी को ये बात सही नहीं लगी. He believed that art, or at least his art, उन्होंने क्या सोचा कि जो आर्ट है, at least his art, at least उनकी जो खुद की बनाई हुई आर्ट है, was for everyone. क्योंकि अगर पेंटिंग के प्राइस बहुत ज्यादा होंगे तो हर कोई नहीं खरीद सकता. तो वो चाहते थे पेंटिंग का प्राइस कम हो और जो उनकी आर्ट है वो सभी के लिए हो. Herring opened a store which he called the pop shop, which he hoped would attract a broad range of people. While somewhat controversial among street artists, some of dash accused, some of whom accused Herring of selling out, the pop shop changed the way people thought. कहते जो पॉप शॉप था, जो हेरिंग की जो शॉप थी, उन्होंने लोगों का तरीका सोचने का चेंज कर दिया था about the relationship between art and business. So our first answer is drawn in New York subway station, graffiti drawn. Second answer, he grew so prolific. Prolific means तेजी से. थर्ड आंसर, आर्ट और एटलीस्ट हिज आर्ट. एटलीस्ट मतलब कम से कम उनकी आर्ट ऐसी हो जो सभी के लिए हो. एंड लास्ट, सम ऑफ होम, जो कुछ एक जो स्ट्रीट आर्टिस्ट थे उनके लिए लगाया. एक्यूज हेयरिंग ऑफ सेलिंग आउट द पॉप शू चेंज द वे पीपल थॉट. लोगों के विचार उन्होंने चेंज कर दिए. सो आवर फर्स्ट आंसर इज ड्रूमा, सेकंड वन इज प्रोलिफिक, थर्ड वन इज एटलीस्ट, फोर्थ वन इज होम. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Honorary degree. Victoria University of Wellington has conferred an honorary degree on a distinguished astrophysicist in a recent graduation ceremony. कहते जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक ऑनरी डिग्री दी है जिन्होंने डिस्टिंग्विश किया एस्ट्रोफिजिक्स को ग्रेजुएशन शेरमनी. प्रोफेसर रिक कॉच, कहते जो प्रोफेसर रिक कॉच है, दैट्स द ऑनरी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस. was received, किनको रिसीव हुई? डॉक्टर कोच को. received the honorary degree of doctor of science for his remarkable contribution. किस चीज के लिए उनको मिली? remarkable contribution to our knowledge of galaxies and dark energy. Professor Coase is a distinguished astrophysicist who has dashed a crucial role, who has played a crucial role in the discovery that the universe is expanding at an accelerating rate. तो क्या है, जो प्रोफेसर कोच है उन्होंने प्ले किया थे क्रूशियल रोल इस डिस्कवरी में जो हमारा यूनिवर्स वो एक्सपेंड होता जा रहा है एक्सलेरेटिंग रेट. एक्सलेरेटिंग मींस एट एन अलार्मिंग रेट, बहुत तेजी से बढ़ रहा है. A finding which led to that lead scientists being awarded a Nobel Prize in Physics in 2011, which he attended in recognition of his contribution in his research. Professor Coase has uses large ground-based and space-based telescopes to observe galaxy clusters that are the largest structures in the universe. So, which are
विच आर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स, जो क्या थे, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स में से एक थे इन द यूनिवर्स. He is also involved in number of national and international committees overseeing the management of these telescopes. Dash his on research activities, Professor Coach has worked to support. As a result, instead of in addition to, yes, कहते हैं इसके साथ साथ और क्या काम करते थे, in addition to his own research activities, Professor Coach has worked to support young researchers and provide public comment on astronomy internationally. So our first answer is received, second one is played a crucial role. ये आपकी collocation है यहाँ पर. Then third answer is which are the largest structures. जो galaxy cluster था वो एक largest structure था. Which, so यहाँ पे नॉन लिविंग है, इसलिए आंसर क्या आ गया, which आ गया. और अगर यहाँ पे लिविंग थिंग होती तो क्या आता, who. वन मोर थिंग, अगर कभी भी हमें इस चीज में चेकआउट करना है कि यहाँ पे हु विच आएगा या दे दो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या चेक करना होता है, अगर कहीं पर भी हमारा पहले कोमा लगा हुआ है तो इट मींस डब्ल्यू फॉर्म वाला आंसर आएगा. और अगर यहाँ पे कोमा नहीं लगा हुआ है तो इट मींस दे, दोस, ऐसे कोई वर्ड आए. क्लियर. सो ये आपके फाइनल एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, कोई भी ब्लैंक. So next question, in addition to. So our first answer is received, second one is played, third one is which. In addition to, इसके अलावा और क्या क्या करते थे, इसके अलावा प्रोफेसर कोच क्या करते थे, यंग रिसर्चर्स को मोटिवेट करते थे, पब्लिक कमेंट जो आते थे एस्ट्रोनॉमी इंटरनेशनली उनके ऊपर कमेंट करते थे. Now, our third slide is about longevity. People are living longer. This longevity is good news for sales team. कहते हैं लोग लंबी लाइफ जी रहे हैं, ये सेल्स टीम के लिए अच्छी बात है. It results in much more dash customer base. It results in much more precise. Precise का मतलब होता है clear, clarity के साथ. Much more precise customer base for them to work from. Why we are living longer is not the issue for everyone. हम लंबी लाइफ क्यों जी रहे हैं, ये किसी के लिए भी इशू नहीं है. Dash in drawing up plans to market a product for anyone involved. जो लोग इन्वॉल्व हैं मार्केट अ प्रोडक्ट बेचने में, उनके लिए कोई इशू नहीं है लॉन्गिविटी. व्हाट दे फोकस ऑन, वो किस चीज पे फोकस करते हैं, इज द फैक्ट दैट देयर आर नाउ मोर एज ग्रुप्स टू टारगेट. उनके पास टारगेट नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा रहेंगे, which means that a sales pitch can be reworked a number of times to more exactly fit each one. For example, dash refer simply to adults. rather than means कि simply adults को define करने के बजाय they are now starting adults, young adults, established adults. So बहुत सारे adults की categories बनाई उन्होंने, मे बी 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. तो इस टाइप से वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके लिए. डैश मार्केट नो लॉन्गर टॉक अबाउट चिल्ड्रन. सो सिमिलरली, जैसे अडल्ट्स के बारे में सिर्फ एक अडल्ट्स की बात नहीं करते हैं, मतलब अडल्ट्स की बात एक ग्रुप की बात नहीं करते हैं, उसमें स्टार्टिंग अडल्ट्स, यंग अडल्ट्स, एस्टैब्लिश्ड अडल्ट्स, 3 to 4 टाइप्स ऑफ एडल्ट्स की बात करते हैं. सिमिलरली चिल्ड्रन में भी सिर्फ बच्चों की बात नहीं करते हैं, बट टेंड टू रेफर टू फॉर द रेंज कैटेगरीज दैट इंक्लूड्स किड्स, teens, preteens, and teenagers. We now have a very diverse population in terms of age that they only be a dash bonus for business. तो ये business के लिए क्या है, profit की बात है, bonus है business के लिए. So our first answer is precise customer base. Customer base कैसा होगा, clear होगा अगर longevity है. Second, involved के साथ हमेशा in आता है, ये collocation है. Involved in, जो लोग मार्केट प्रोडक्ट कर रहे हैं उनके लिए लॉन्गिविटी कोई इशू नहीं है, जो इन्वॉल्व है इस चीज में. थर्ड आंसर है रादर देन मींस कि सिंपली अडल्ट्स को रेफर करने के बजाय वो बहुत सारे अडल्ट्स को बताते हैं. सिमिलरली मींस कि जैसे चिल्ड्रन में भी सिर्फ चिल्ड्रन की एक कैटेगरी नहीं है, उसमें बहुत सारे किड्स, टीन्स, प्रीटीन्स, टीनेजर्स. देन कहते हैं ये जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, जो ये बहुत डिफरेंट एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, बोनस है.
ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हैव मैनी कॉमन लिंक्स, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बहुत सारे कॉमन लिंक्स है, बोथ कंट्रीज वर रिसेंटली सेटल्ड बाय यूरोपियंस, आर प्रीडोमिनेटली इंग्लिश स्पीकिंग एंड इन दैट सेंस शेयर अ कॉमन कल्चरल हेरिटेज। अब देखिए मैंने आंसर नहीं देखा, तो कल्चरल हेरिटेज ये क्या है, कोलोकेशन है, कल्चरल हेरिटेज, दोनों का कल्चरल हेरिटेज भी क्या है, सेम है, ऑल्दो इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर both countries are physically isolated and have some populations by वर्ल्ड स्टैंडर्ड। कहते दोनों ही जो कंट्रीज है वो although in close proximity in one another, both countries are geographically isolated, geographically क्या है, isolated है, एक दूसरे से अलग अलग है, और जो उनकी पॉपुलेशन है स्मॉल पॉपुलेशन है वर्ल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, क्लियर, वर्ल्ड स्टैंडर्ड में उनकी पॉपुलेशन बहुत कम पॉइंट्स में आती है, दे हैव सिमिलर हिस्ट्रीज एंड एंजॉय क्लोज रिलेशंस टू मैनी फ्रंट्स in terms of population deaths, in terms of population characteristics, अगर हम population characteristics की बात करें, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड have much in common, both countries have minority indigenous population, वो दोनों ही countries में जो खुद की population है बहुत कम है। during the later half of the 20th century, later half of the 20th century means कि after 1950s have seen a steady stream of migrants, have seen देखा गया कि जो steady stream धीरे धीरे लोग migrate होना start हुए from a variety of reasons, अलग अलग reasons से throughout the world। both countries have dash similar decline, both countries have experienced, दोनों ही countries experience कर रही हैं similar decline in fertility since the high levels recorded during the baby boom, and alongside this have enjoyed the benefits of continually improving life expectancy। one consequence of these trends is that कहते इसका एक result है इस trend का that both countries are faced with the aging population, दोनों ही कंट्रीज में एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एंड द डैश चैलेंज एंड द एसोसिएटेड चैलेंज, और उसके जो साथ के जो चैलेंज है मींस कि उनकी केयर करना, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, टेक केयर करना, प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट केयर एंड सपोर्ट फॉर ग्रोइंग ग्रुप विद इन द कम्युनिटी, तो वो उनके लिए क्या बन चुका है, चैलेंज। सो आवर फर्स्ट आंसर इज cultural heritage, second answer is world standard, third population characteristics, fourth answer is have experienced similar decline, associated challenge। आप देखिए यहाँ पे हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड वन कोलोकेशंस यूज हुई है। कल्चरल हेरिटेज क्या हमारा कोलोकेशन है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड अगेन कोलोकेशन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन कोलोकेशन। देन नेक्स्ट है हमारा बोथ कंट्रीज हैव, हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सो हैव एक्सपीरियंस्ड। Next, one of the consequences of this trend is that both countries are faced with the aging population। यहाँ पे faced word use किया है, faced means face कर रही हैं, और end के साथ sentence को add किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, associated challenge providing appropriate care and support of this growing population within the community। So our first answer is heritage, second one is standards, third characteristics, fourth experienced, and last one is associated। Language extinct, at the moment there are between 6 and 7,000 languages in the world। कहते हैं at moment इस टाइम पे 6-7 हजार लैंग्वेजेस है पूरी दुनिया में, according to linguistics। जो linguistic कौन होते हैं, जो लैंग्वेज को जानते हैं, जो लैंग्वेज के बारे में लिखते हैं। 50% of these are in danger of becoming extinct, so these are in danger of becoming extinct, जो extinct लुप्त होने वाली हैं। The speed of language loss has escalated over the past few decades। जो स्पीड है लैंग्वेजेस के लॉस होने की वो बढ़ती ही जा रही है लास्ट फ्यू डेकेड से, बिकॉज द बिजनेसेस दैट नीड टू कम्युनिकेट विद अ रेंज ऑफ पीपल। कहते जो बिजनेसेस है उनको जिन लोगों के साथ बात करनी है, इट मींस फ्रॉम अदर कल्चर्स, दैश टू एम्प्लॉय, प्रेफर टू एम्प्लॉय, वो प्रेफर करते हैं, prefer to employ more widely used languages। more widely used जो language use होती है, जो लोग उनको जानते हैं सिर्फ उनको prefer करते हैं, such as English, Chinese or Spanish। This attitude is understandable, but it means that many local languages are dying out before anyone has the opportunity, has had the opportunity to study them। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट इट मींस दैट मैनी लोकल लैंग्वेजेस आर डाइंग आउट, बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस डाइंग आउट हो रही है बिफोर एनीवन, किसी एक की बात की है। सो इसलिए यहाँ पे क्या है, हैज और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी देम। अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक्स सम ऑफ दीज लैंग्वेजेस कुड रिवील अ ग्रेट डेप्थ,
A great deal. A great deal क्या होता है आपकी कोलोकेशन होती है. A great deal of useful information about language learning and cognitive development. In addition, a local language that has been built on the local culture contains words and phrases that express that culture. Lose the language and you arguably may lose the culture too. जब हम किसी लैंग्वेज को खो देते हैं तो इट मीन्स हम उस कल्चर को भी खो देते हैं. And finally, historians will dash. Will के बाद क्या आएगी verb की first form. So will argue. Historians will argue that a language contains evidence of a region's history and should, for that reason alone, be preserved. So our first answer is of becoming. Second one is prefer. Third answer is anyone who has had the opportunity. Fourth one, a great deal of. And last answer is are you. I hope you understand all the answer. If you have any query, please comment us and also follow and subscribe our channel. Thank you. Have a great time. अगर आपके लिए कंटेंट इंफॉर्मेटिव रहा है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियो सो यू गेट such type of videos in future as well. Thank you. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.